अच्छा, अभी जब हम राजी फिल्म की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि क्या मतलब आपका आपके साथ क्या हुआ उस दौरान। फिर एक मैंने ये भी सुना कि आपने ये भी कहा कि जो आपने लिखा और जो राजी में दिखाया गया वो थोड़ा मिसमैच था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा मिसमैच था और कमाल से किया गया, सफाई से किया गया। हाँ, मेघना ने जानबूझ के किया क्योंकि लेफ्टिस्ट है। मुझे इस बात की समझ नहीं थी। मुझे बताया जाता था नेवी टाइम में, ट्रस्ट बट वेरीफाई। वेरीफाई नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तिरंगा को हटा दिया। किसी पूरी फिल्म में आप एक भी तिरंगा नहीं देखेंगे। किताब में है, तिरंगा पे तुम जीते हैं, जान दे देते हैं, जान ले सकते हैं। और पाकिस्तानी फ्लैग दिखाए, गाड़ियों पे दिखाए, दिस दैट द अदर, ओके, बट वहां नहीं दिखाए। और सहमत को ऐसा दिखाया जैसे जिस तरह से उसने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पूरी तरह से टोका कि मुझे क्यों भेजा गया। जैसे किसी कश्मीरी मुस्लिम औरत ने बहुत बड़ी गलती करती हो देश के लिए लड़ने के लिए। सच उलट है। वो देश में आती है, रेड कारपेट पे उसको उसारा निकाल दिया। उसको वो ट्राई कलर को देखती है, बाउज डाउन, बोलती है कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी बैक होम। ओके, मदर मदर धरती को बोलती है माँ। और सल्यूट करती है और बैंड जन गण मन प्ले करता है। यहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए था। तो आपकी किताब में जो असली कहानी है उसमें आपने जो लिखा और उसमें ये बताया कि वो वापस आती है और उसका सम्मान होता है और वो धरती माँ का शुक्रिया अदा करती है और जनगण मन बसता है। फिल्म में दिखाया गया कि वहां पर जैसे वो इस उहापोह में कि मुझे क्यों भेज दिया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो इधर से उधर से दोनों तरफ से पिस गई वाली स्थिति है। तो ये बहुत बड़ा फिर तो चेंज है। इसको कराची ने सेलिब्रेट किया था। ओके, केक कटा था और इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ में नारे लगे थे। और नारे भी अजय बिसारिया इंडियन हाई कमिश्नर थे, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उनके घर के सामने हाई कमिश्नर थे। तो मैंने जब उन्हें फोन किया, या पता नहीं कैसे हमारी फोन पर बात हुई, बोलते तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे खिलाफ तो नारे लग रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ा तगमा है। Welcome back, friends. Welcome back to Book Review. Today we are going to talk about a book which I recently completed. This is the name of the book, Calling Sehmat by Harinder Sikka. Copyright 2018. The book first came into publication in 2018 and it is a very fast moving book. I started reading this book on 27th of July 2024 and completed it on 16th of September 2024. In between, I did not go in a complete one stretch. It is sometimes you pick a book and you start reading non-stop. I read it in bits. That is while traveling, sometimes when I was at home, and so in spite of that, it has got completed so fast. This book is very nice to read because it takes you through all the emotions of a person who is a die-hard Indian, who is ready to do all the sacrifice, be it the emotional sacrifice, be it the sacrifice of the person you love, be it the sacrifice of the land that you have to be far away from, be it taking risks, being very proud of being an Indian. This book speaks about a character called a person in real life. This is based on a real life story called Sehmat. This book is set in the year 1971. And whenever you read about the lady, your chest fills up with pride. She has been a great person, and we should, as an Indian, we should thank the person. But when you saw the video a while ago, you will realize that a person
who has written this book, it took him 8 years. It took Harinder Sikka ji 8 years to write this book. And he is a die-hard patriotic Indian. Harinder Sikka ji is like, you can feel it. You can feel his love for the nation. So he feels great remorse and he feels great regret. He feels great regret about having given the rights of the book. Because I have read this book, now it makes me feel that pain more. Because if you read the book and if you watch the movie, there is a big difference. That difference makes you feel asking yourself questions like why? Why is that difference? Why did that, like the person, when Sehmat comes back to India, she gets a grand reception. Why is that not shown? Sehmat never had any feelings of why me. She was always like, why not me? I will always stand for my country. The book makes for very good reading, very fast reading, and it has no flaws. The book doesn't beat around the bush. It just goes in a very timely fashion. It is set in 1971 war, the liberation of Bangladesh war. If you see the movie, Razi movie, I have seen it again, just because I have seen it twice. After reading this book, I saw the movie again, so that I don't make any comments which is not as per my memory of the movie. In the Razi movie, you will see lots of Pakistani flag, but I don't remember seeing any Indian. At the same time, this movie is set in 1971. How we trained them, how India's contribution in the liberation of Bangladesh, rapes committed by the Pakistani army. Close to 2 lakh Bangladeshi women were raped. Lakhs of people were killed. The movie is as if it is not in tune with the times. Even if you are making a movie on Bangladesh, and 1971 is the central point of the movie, you will definitely show how the torture was done in Bangladesh by Pakistani army. This movie doesn't show you the rape of 2 lakh Bangladeshi women, the millions killed. Why that could be is beyond me. It is for you to understand. As far as the book is concerned, you should definitely read this book. This book, when you read this book and then when you watch the movie Razi, you will understand what I am talking, and you will understand what the writer of the book, Shri Harinder Sikka ji, has told. Please read this book. Thank you and take care. See you again.